इंडिया में गेमिंग लैंडस्केप बहुत जल्दी इवॉल्व हुआ है. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम द 90s टू नाउ. To go from this, definitely not a Nintendo console, to PCs, mobiles and consoles, it is a pretty long journey. और इस वीडियो में मैं इसी जर्नी की बात करने वाला हूँ. By the way, spoiler alert, Nintendo still hasn't appeared anywhere in this journey. और मुझे क्या, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई Nintendo का गेम खेलना है. I wasn't around in the 90s by a lot. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि I didn't experience any stuff from the 90s. I had a thing, and a lot of people who are watching this video right now might also have that thing. And if you don't know what thing I'm talking about, that thing is known as an elder cousin brother or an elder brother. एक मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने कज़न्स के घर इतने खुशी खुशी जाता था was to play games. हाँ, मेरा मतलब है कज़िन भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करने में भी बहुत मज़ा आता था, लेकिन क्या उतना मज़ा आता था जितना कॉन्ट्रा खेलने में आता था? आई डोंट थिंक सो. मीट द नॉट सो निंटेंडो कंसोल. ये कंसोल था चाइनीज़ कॉपी ऑफ अ पॉपुलर निंटेंडो कंसोल, और आप इस कंसोल पे सारे गेम्स खेल सकते थे. यू कुड प्ले सोनिक, यू कुड प्ले कॉन्ट्रा, यू कुड प्ले मारियो एंड मैनी अदर गेम्स. और ये गेम्स सीडीज़ में नहीं, कैसेट्स में आते थे. जस्ट प्लग दैट बैड बॉय इन एंड द गेम इमीडिएटली स्टार्ट्स. None of this modern bullshit like ओ पहले स्टीम खोलो, अकाउंट बनाओ, टर्म्स और कंडीशन साइन करो, उस पर्टिकुलर गेम का लॉन्चर डाउनलोड करो, फिर जाके आप गेम खेल सकते हो. या कॉन्सोल्स में जैसे फॉर एग्जांपल इन PS2 जब आप CD डालते थे PS2 के अंदर, दैट एंग्जाइटी वाला मोमेंट व्हेन यू आर वेटिंग कि भगवान प्लीज़ रेड स्क्रीन मत आना. So yeah, cassettes were the best, and I mean with offers like 99,000 games in one cassette, sign me up right now. And then आप बाद में realize करते थे that it was really just like 15-20 games, but it's just those 15-20 games copy pasted again and again. Contra मेरा favorite game था, even though I really sucked at the game. मैं और मेरा भाई कभी first level clear ही नहीं कर पाए. And it's not like it was my fault. I just kept on dying intentionally just to piss off my brother. You know, typical younger sibling stuff. और ऐसी ही हरकतों के वजह से I was at the receiving end of the disconnected controller prank. अब जिनको नहीं पता डिस्कनेक्टेड कंट्रोलर प्रैंक क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जिन्हें पता है डिस्कनेक्टेड कंट्रोलर प्रैंक क्या है, आई एम सॉरी. बेसिकली क्या होता है, आपका बड़ा भाई कोई गेम खेल रहा होता है और वो प्रॉबेबली उस गेम को अकेले खेलना चाहता है या अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है. फिर आप आते हो उसकी पार्टी ख़राब करने, फिर आप बोलते हो भैया मुझे भी खेलना है, एंड देन ही सेज नो. फिर आप अपने पेरेंट्स को जाके कंप्लेन करते हो, फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है. फिर वो आपको आपके बगल में बिठाता है, फिर आपको एक स्पेयर कंट्रोलर देता है, और फिर आपको लगता है कि ओ मैं भी ये गेम खेल रहा हूँ, ओनली फॉर यू टू लेटर रियलाइज 10-15 मिनट बाद कि आपका कंट्रोलर कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं था कंसोल से. मेरे बड़े भाई ने मुझे किया है, आई डिड इट टू माई यंगर ब्रदर्स एंड आई एम प्रीटी श्योर दे डिड इट टू देयर यंगर ब्रदर्स एज वेल. यू सी, इट्स अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन, एक ऐसी साइकिल जो कभी ख़त्म नहीं होगी. जिससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, वी ऑल्सो हैड आवर वेरी ओन गेम बॉय, ब्रिक गेम्स. लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं, बट आई कैन ऑलरेडी सी इट. दिस शिट ऑल्सो हैज़ दैट 999 गेम्स इन वन वाला स्कैम. आई मीन देखने से तो लग रहा है द ओनली गेम दिस थिंग कैन रन इज टेट्रिस, जो बहुत ही अच्छा गेम है. जिससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, लेट मी क्विकली रूइन कॉन्ट्रा फॉर यू. 2000s वाली एरा तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है. आप तो ये भी कह सकते हो कि मेरा चैनल स्पेशलाइज करता है ये एरा में, एंड यू वोंट बी रॉन्ग. मैक्स पेन 2, मोस्ट वांटेड, साइलेंट हिल 2, जो प्रॉबेबली मेरा फेवरेट वीडियो है इवन दो किसी ने देखा नहीं. 2000s में इज़ वेयर यू स्टार्ट टू सी ग्लिम्पसेस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, साइबर कैफ़ेज़. लेकिन जिससे पहले मैं इनके बारे में बात करूँ, आई विल एडमिट मैं कभी कोई साइबर कैफ़े गया नहीं. आई नो, वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन मैं क्यों ही जाता. I had a PC at my home. I know, very privileged complaint by Aryan Sahu, but still मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. हाँ, अब आप बोलोगे कि साइबर कैफ़े आप जा सकते थे ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है, यू थिंक दिस किड राइट हियर नोज दैट यू कैन प्ले CS 1.6 ऑनलाइन? नहीं, मैं खुश था बॉट्स के अगेंस्ट डी डस्ट पे खेलने के लिए. मुझे डी डस्ट का एक चीज़ जो अच्छे से याद है इज़ अगर आपको आई थिंक B साइट पे जाना होता था, यू कुड गो थ्रू अ टनल, और हर बार बॉट्स
टेररिस्ट बॉट्स उसी टनल के थ्रू जाते थे बी साइड पे, और मुझे उस टनल में जाने से इतना डर लगता था कि मैं उस टनल को बोलता था इट्स अ टनल ऑफ डेथ, क्योंकि मैं हर बार मर जाता था बॉट्स से। तो मैं इंटेंशनली अपने काउंटर टेररिस्ट बॉट्स को बेट करता था, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, फिर मैं जाके लास्ट में जाके मारूंगा। एंड कमिंग टूवर्ड्स कंसोल्स इन द वेस्ट, जहाँ पे PS1, PS2, Xbox, Halo was popping off, I'm pretty sure इंडिया में लोग अभी भी कैसेट्स पे गेम खेल रहे थे। Hell yeah, 99,000 game in one, fuck you Halo. Like I played on the PlayStation 2 for the first time in like 2012 or 2013, fucking Street Cricket। लेकिन एक गेम जो मुझे PlayStation 2 में बहुत पसंद था was WWE SmackDown vs Raw 2011। मैं अब शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन I was pretty damn good at that game। लाइक मेरी स्पेशलिटी थी कि मैं रिवर्सल हमेशा टाइम कर पाता था परफेक्टली, एंड मे बी दैट्स द रीज़न वाई आई एम सो गुड एट सेकिरो। I was perfect with my reversal timings, and I still am. It's about pure brutality. Get reversed, motherfucker. There you go. What an amazingly gifted maneuver. लेकिन at the end of the 2000s era arc, games on mobile phones were starting to become a thing. Games like Bouncing Ball, Snake were starting to gain popularity. But man, was I not ready for what was coming. From 2010 to 2017, touchscreen phones or smartphones started to get cheap, and along with the reduced prices, the popularity of mobile games started to increase. क्योंकि एक तरफ जहाँ PCs और console could really only break into the market of tier 1 and tier 2 cities, mobile phones and mobile phone games could even enter tier 3 markets as well, जो PCs and consoles कभी नहीं कर पाए. And mobile phone games market exploded. Temple Run, Subway Surfers, Cut the Rope, Where is My Water, Fruit Ninja, Jetpack Joyride, and of course Angry Birds. ये सारे गेम्स बहुत पॉपुलर हो गए, और इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे। बिकॉज ऑफ इट्स प्ले इट एनीवेयर पोर्टेबिलिटी फीचर। अब आप आर्ग्यू करोगे कि PSP और PS Vita भी वो ऑफर करता था, बट कम ऑन, मोस्ट ऑफ द पीपल कुडंट अफोर्ड बोथ ऑफ देम, इट वाज आइदर वन ऑफ दोज टूज। सो प्रैक्टिकल चॉइस तो हमेशा मोबाइल फ़ोन ही होने वाली थी। सेकेंड रीज़न ये था कि इन सारे गेम्स का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी था। ये सारे गेम्स का ट्यूटोरियल विजुअल इमेजेस के साथ दिया जाता था रादर दैन टेक्स्ट। क्योंकि अगर सोचो अगर टेम्पल रन का ट्यूटोरियल सोल्स गेम्स के फॉर्मेट में दिया होता तो इंट्रोड्यूसिंग टेम्पल रन विद वर्ल्ड टेंडेंसीज, एवरी टाइम यू डाई आपके कैरेक्टर की स्पीड आधी हो जाती है। टेम्पल रन मेड बाय हिडेटाका मियाजाकी। और तीसरा रीज़न, द मेन रीज़न, बिकॉज ये सारे गेम्स फ्री थे। बिकॉज देयर इज वन थिंग दैट्स वर्थ नोइंग अबाउट अस इज दैट वी लव फ्री स्टफ, बट द मदर और द क्वीन ऑफ दीज मोबाइल फोन गेम्स is Candy Crush. Fun fact, this game has the largest gaming community. It's not BGMI, it's not Free Fire, it's not Minecraft, it's not GTA 5, it's not PC games, it's not console games. It's Candy Crush, which has the largest gaming community. We all are a loud fan base, not the largest fan base. लेकिन द रीज़न वाई हम लोग कैंडी क्रश के बारे में कुछ सुनते नहीं हैं इज़ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर बेस ऑफ दिस गेम इज़ फीमेल. And most women don't really go around telling people that they're gamers. And even if they are one, they refuse to identify themselves as one. Again, most women, emphasis on most women, if you identify yourself as a gamer, love that. लेकिन PCs and consoles आधे से ज़्यादा लोगों को inaccessible हो गए थे because PCs and consoles का price just kept on increasing. And people definitely started to switch over to mobile phone games now, because even I have friends who had consoles and they would play mobile phone games instead because all of their friends were playing on mobile phones. So why would you be the outcast and just keep playing on your console when all your friends are having fun together, right? So it makes sense. Peer pressure is a real thing. So people who used to play on older PCs and consoles, even they started to switch over to mobile phone games. Mobile gaming for me was like a fun backup option. मॉम एंड डैड शॉपिंग कर रहे हैं और मैं दुकान के कोने में बैठ के क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ, और पापा इन क्लासिक पापा फैशन सेड, बेटा कोई दिमाग लगाने वाला गेम खेलो, ये क्या खेल रहे हो? एंड आई वाज लाइक, पापा प्लीज़, मैं और मेरे दोस्त क्लैन अटैक प्लान कर रहे हैं। एंड व्हाट सेन किड वुड हैव पिक्ड दिस ओवर दिस? और फिर 2017 में एक आइकॉनिक गेम आता है PC पे, PUBG. And the game does so well on PC that the developers are like, we should capitalize on the mobile phone market as well. और फिर 2018 में
comes the godfather, the iconic PUBG Mobile. Was I really surprised that PUBG Mobile did so well? Absolutely not. उस गेम का कॉन्सेप्ट was new to the people here. और इस गेम में there were no barriers to entry. आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे. लेकिन बेस्ट चीज़ ये थी आप अपने दोस्तों के साथ अदर प्लेयर्स के साथ compete कर सकते थे and could achieve a win state. और ये सबसे बेस्ट बात थी. It's not just winning alone like in Angry Birds or Cut the Rope, but winning together with your friends. एंड ऑफ कोर्स अनदर मेजर प्लस पॉइंट ये था कि ये गेम भी फ्री था. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दिस गेम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. लाइक 2019 में ही मैं समझ गया था दैट दिस गेम इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज मार्केट इन आवर कंट्री. और फिर कॉडेम आता है, फ्री फायर आता है, पबजी गेट्स बैंड, कम्स बैक एज BGMI, 4G भी आता है. But everybody ignores that, and then pandemic hits, Among Us appears. Fucking hate that game. Fan base for these mobile phone games continues to grow at an exponential pace. लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मार्केट ही ग्रो हुई थी. लॉकडाउन में इवन द PC मार्केट ग्रू एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वन गेम. और मैं इस गेम का बहुत मजाक उड़ाता हूँ. ये गेम रिलीज़ हुआ था 2020 में एंड नो इट्स नॉट गेंशिन, इट्स फकिंग वैलोरेंट. आउट ऑफ ऑल गेम्स इट हैड टू बी वैलोरेंट. अब आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे हाँ कुछ भी हो ही नहीं सकता. इट इज़ ट्रू. इट इज़ बिकॉज ऑफ वैलोरेंट एंड इट हैज़ वन मेजर रीज़न बिकॉज ऑफ इट. बिकॉज वैलोरेंट जब 2020 में रिलीज़ हुआ था इट वॉज़ वेरी बैकवर्ड सिस्टम कंपैटिबल. बैकवर्ड सिस्टम कंपैटिबल का मतलब ये कि पुराने सिस्टम्स भी वैलोरेंट को रन कर पा रहे थे. अब मैं एडमिट करता हूँ इन इट्स करंट स्टेट वैलोरेंट बैकएंड सपोर्ट उतना नहीं देता है जितना 2020 में देता था. लेकिन 2020 में इतना अच्छा बैकएंड सपोर्ट था दैट देयर वर सो मेनी प्लेयर्स कमिंग बैक टू PC गेमिंग बिकॉज ऑफ वैलोरेंट. एंड नॉट ओनली जस्ट playing Valorant but consuming a lot of content for Valorant on YouTube, Reels and everywhere. So PC gaming was starting to gain a bit of spotlight. Now am I happy that it was fucking Valorant? Yeah, sure, why not? Even I've made Valorant content. I can't really complain. I've made a lot of Valorant content actually. And you're not allowed to watch that. Don't go and watch that. अब आप बोलोगे आर्यन सिर्फ वैलोरेंट की वजह से नहीं था. इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइनक्राफ्ट एंड GTA 5. एंड देन आप फिर आप वो गलत नहीं हो उस स्टेटमेंट के साथ. बट GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट लोगों के लिए फिर भी इनएक्सेसिबल था. आई मीन मे बी नॉट माइनक्राफ्ट बिकॉज माइनक्राफ्ट का आप APK खेल सकते हो फ़ोन पे. लेकिन GTA 5 नॉट एट ऑल पॉसिबल. और लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा आई फाइंड इट सो होलसम व्हेन आई सी ऑन गूगल दैट पीपल आर स्टिल सर्चिंग फॉर GTA 5 मॉड APK, GTA 5 APK. लाइक मोबाइल गेमिंग अब सिर्फ इंडिया का नहीं है. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक साउथ एशिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर मोबाइल गेमिंग. एंड हर एक साउथ एशियन कंट्री में mobile phone gaming is going to be the center show, and I'm fine with that. I'm totally fine with that. And that's why to discuss this topic I'm going to segue to the next chapter because my script mein likhna bhul gaya on how should I segue to the next chapter. So अब रही बात फ्यूचर की. आई थिंक अगर आप कोई पूछेगा आर्यन सम अप योर फ्यूचर होप्स फॉर द कम्युनिटी इन वन वर्ड, आई विल से होपफुल. You know why? Because I think while making these videos for some time I've realized that there are plenty of people who play games on like PCs and consoles as well, and you guys are really passionate about the games that you play, and I love hearing about that, and I really love hearing about that. But if there is one major concern for me, like एक चीज़ जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, especially कुछ comments, और कुछ comments मतलब हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, but I think I should address those comments right now because it's like a lot of these comments have like these superiority complex. ये मतलब कि मैं तुमसे बेटर हूँ बिकॉज मैं ये डिवाइस पे गेम खेलता हूँ. पहली बात, गेम खेलते हो, किसी से बेटर नहीं हुआ. सॉरी, इट्स लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि यू शुड नेवर लुक डाउन और पंच डाउन ऑन एनीवन. मतलब तो ठीक है अगर वो बंदा मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलता है, तुम PC पे खेलते हो या कंसोल पे खेलते हो, इट शुडंट रियली मैटर. इट डजंट बॉदर मी एंड इट शुडंट रियली बॉदर यू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो अगर किसी को अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मोबाइल फ़ोन पे खेलने से मिल रहा है और आपको PC या कंसोल पे मिल रहा है, इट शुडंट हैव एनी डिफरेंस. Make sense? It shouldn't really matter. Like I see stuff on like Reddit, like
like there's like this, it's like fucking caste system बना के रख दिया है कि कौन कैसा किस लेवल पे गेमर है. और पहली बात, who said like being like a high profile gamer will get you a job? Is there an option in LinkedIn that I didn't see? So this divide or like this looking down on people who play on their phone, because whether you like it or not, PC gaming is growing. So my opinion, like my approach or my vision for this channel is like if let's say कोई बंदा is just starting out in PC gaming, I really want to show him the good side where they're like for example in my comprehensive gamer guide, if say they see that video, they see comments on that video, and it's just that people giving suggestions which games they should play, which games they should try. And I think that to me is like my vision for the channel, for my channel and for the community as well. जो लोग PC पे games खेलेंगे या console पे games खेलेंगे, just give them better suggestions rather than shit talking them. That's all. And if you keep doing that, the future is amazing. Yeah, like we won't grow. मैं cult चालू कर रहा हूँ क्या? Like PC gaming won't grow like an exponential pace to mobile gaming, and I think you should just accept that. Like we might be a slow moving train, but it's fine. Just embrace it and just welcome people rather than shit talking them for like playing on their phone. I really hate that. Don't do that. मैं बोलते ऐसे रहा हूँ जैसे मैं अकेले रोक दूंगा.